मैम पढ़ी गला तो हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून आज क्लास हबनी 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 नाइ मु अच्छी बंची ना ना टेक्निकल इश्यूज नु हाँ वन बाय वन क्लास कला बेले को टिके डिले हो गला किछि कथा नै तो आज ठारू हमर जेतु OSST रो एग्जाम डेट आउट हे सरलानी आमे माने कोन करबा तार आ सारा सिलेबस मध्ये हमर एसएसबी टीजीटी सहित रिलेटेड रेगुलर क्लासेस नबा आशा करूची क्लास गुडी को तुमरो OSST प्रिपरेशन पई हेल्पफुल हबो एवं अपकमिंग फ्यूचर जिंस पई तुमको जहाँ भी एग्जाम अच्छी हेल्पफुल निहाती भाबरे हबो तो वन बाय वन आज ठारू ही आमे स्टार्ट करबा देखा जाऊ आमर को जाए जाउची को जाए नाही से कथा भाबिबा सेटा तो परर कथा किंतु स्टार्टिंग ता आज ठारू ही करबा ओके तो थैंक यू एवरीवन एते समय अपेक्षा करथिबारो जहा हो नै नै आज क्लास हबो फर्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द लिस्ट हमर जो मेंटल ऑपरेशन बा हमें मुंडा खर्च करूछे कोउथरे हमर मेंटल ऑपरेशन ता बहुत कम थाए इमिटेशन इमेजिनेशन इंक्वायरी इंट्यूशन कोटारे यस टीजीटी पई मध्ये हेल्पफुल तो डिस्कशन करबा आज ठारू प्रणाम प्रतीक्षा प्रियंका कोटा हबो सिटी एग्जाम डेट तो बहुत जल्दी आसीबा पिला माने मु तो माने कहितले लास्ट वीक तम माने कई विश्वास करू ना म कोन करबी तो थैंक यू एवरीवन एठी कोन कह गला इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द लिस्ट कोटारे हमर मेंटल ऑपरेशन ता बहुत कम थाए इमेजिनेशन जते बेले हमें इमेजिनेट करूछे किछि गोटे जिंस भाबुछे सेडा एम्ति हेइतबो एडा एम्ति हेइतबो माने रथ यात्रा माने हमें भाबी दोछे माइंड रे जगा एम्ति बसिथिबो जगा बलिया सुभद्रा आसुथिबे झुली झुली तांकर बाहुडाटा केमिति हेइथिबो हमें घरे बसी गोटे इमेजिनेट करि दोछे जोठी हम माइंड घुरुछे हमें जानुछे तो एटा मध्ये हमर चिंता शक्ति रहिला इनक्वारी आमे किछि गोटे जिंस इनक्वारी करूछे ताहाले ए जिंसटा मध्ये हमको हेल्पफुल हबो इंट्यूशन हम अंतः शक्ति हम भावना हम रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी बट इमिटेशन हमें काहा को गोटे देखि कि इमिटेशन करबा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इमिटेशन होची लीस्ट मेंटल ऑपरेशन इमिटेशन ने हमें एते मेंटल ऑपरेशन यूज करि न थाओ एंड ये समस्त टिके सेशन को शेयर करि दबो तुम्हारा जो फ्रेंड माने भी OSST किबा SSB TGT पई प्रिपेयर होछनी तांको मध्ये हेल्पफुल हबो नेक्स्ट देखिबा ना व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विथ द अनडिजायरेबल इमोशन ऑफ द adolescent जो माने adolescent आउछंती जो मानकर कैशोर अवस्था होउची तांकर अनडिजायरेबल इमोशन को हैंडल करबा पई कोउटा बेटर रहउची प्रणाम इतिश्री punishing the adolescents advising them not to behave in that way process of sublimation ना bringing it to notice the parents कौन हबो कोटा हबो पिले 2 नंबर जहार अनडिजायरेबल बिहेवियर होची हमें कौन करबा very good option C process of sublimation is the correct answer sublimation kono na it is the process it is the activity it is a systematic process in which we can eradicate all of the undesirable behavior of the student तो छुआ मानकर जो अनडिजायरेबल बिहेवियर रहउची हमें एई प्रोसेस द्वारा से अनडिजायरेबल बिहेवियर गुडा को एराडिकेट करि परिबा क्लियर नेक्स्ट 3 नंबर हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एठी पिला माने इंटेलिजेंस थ्योरी कथा आसिला ताले ग्रुप फैक्टर थ्योरी एटा बारंबार परीक्षा रे आसुची तुम मानकर एग्जाम रे रिपीटेडली आसुची मल्टी फैक्टर थ्योरी ग्रुप फैक्टर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो किए कहिथिले ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कथा किए कहिथिले ग्रुप फैक्टर थ्योरी कथा किए कहिथिले इंटेलिजेंस रा मोहित ओके सत्य सुंदर मिलन वेरी गुड रूली 3 नंबर डी इज द करेक्ट आंसर थर्नस्टोन कौन करिथिले ना ग्रुप फैक्टर थ्योरी कथा कहिथिले
स्पीयरमैन ताले कौन कहितले आउ टर्मैन कौन कहितले गिलफोर्ड किए कहितले एटा तुम मानकर काम कमेंट बॉक्स रे निहाती जणेबो किए कोटा कहिथिले। नेक्स्ट आसला लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएट विथ कॉग्निटिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, इंटेलेक्चुअल डोमेन। लैंग्वेज डेवलपमेंट चाइल्ड रो कहा सहित रिलेटेड नुहे। language development of the child is language development of the child is not associated with cognitive domain। निहाती भाबरे कॉग्निटिव सहित ही हमर चिंता शक्ति हमर एठी प्रोसेस ले ही हमर लैंग्वेज बाहरबो। अफेक्टिव डोमेन मोर इमोशन ने मु जहा फील करूची एबे भी मु जोटा तमको कहूची मु मो लैंग्वेज माध्यम रे प्रकाश करूची। वेरी गुड। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन। जेनेटिक फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। अफेक्शन द्वारा मु बाहर करछि इंटेलेक्चुअल डोमेन मध्ये हबो। राइट आंसर होछि ऑप्शन सी कोग्निटिव डोमेन लर्निंग बाय डूइंग जोडा में कहूचे डूइंग एक्टिविटी एथरे जीवनी लैंग्वेज डेवलपमेंट रे। नेक्स्ट आसला कौन द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर इज एसोसिएट विथ आम बिहेवियर डूइंग एक्सेप्ट कहा से रिलेटेड कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल अफेक्टिव ना कोग्निटिव डोमेन। डूइंग एक्सेप्ट एबे तुमको कहिथिली डूइंग एक्सेप्ट कथा ताले एठी डूइंग एक्सेप्टटा कहा सहित रिलेटेड हैंड्स ऑन एक्टिविटी बा हमें जोटा डूइंग किछि ओडे करी कि सिखुचे सेटा कहा सहित रिलेटेड। जस्ट टिके आगर ही मु कहिथिली लैंग्वेज डेवलपमेंट रे कोग्निटिव आसीबो नाही काहे ना एटा गोटे डूइंग एक्सपेक्ट ता पर क्वेश्चन ही हमर आसी गला द डूइंग एक्सपेक्ट ऑफ बिहेवियर इज एसोसिएट विथ एंड यस तुम मानक मन रे क्वेश्चन थिबो कि आमे जदी पीआईक्यू सीरीज स्टार्ट करूछे आज ओडब्ल्यूएसटी रा आमे को वर्ष रा पीआईक्यू सीरीज करूछे ना 2016 मसिहा रो जो ओडब्ल्यूएसटी एग्जाम रो पीआईक्यू थिला आज सेटा को ही आमे स्टार्ट करूछे। डे बाय डे आमे अलगा गुडा को मध्य स्टार्ट करिबा। नेक्स्ट आसला कौन ए क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज गुड एट मैथमेटिक्स लिटरेचर सेंट्रल थिंकिंग ना लैटरल थिंकिंग। जने क्रिएटिव लर्नर आमे काहा को कहिबा कोउथिरे ना जे मैथमेटिक्स रे गुड जे लिटरेचर रे गुड जे सेंट्रल थिंकिंग रे ना जे लैटरल थिंकिंग रे आमे काहा को क्रिएटिव लर्निंग कहिबा लर्नर। वेरी गुड रजत ना लैटरल थिंकिंग बा डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट आसला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कांसेप्ट ऑफ द एडोलेसेंस सक्सेस फेल्युअर एक्सेप्टेंस ना अचीवमेंट कोटा हबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द एडोलेसेंस 7 नंबर acceptance ना failure से देछि which of the following affects the development of self concept of the adolescents acceptance ना failure। हाय कलिंग तो ये फेल्युअर हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जा आग को आम नेक्स्ट होची जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेपीटी इज एसोसिएट विथ द थ्योरी ऑफ एटा समस्त बोधे बहुत फेवरेट जिनसडा कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा सहित एसोसिएटेड जो भी एग्जाम हो से जिनसडा पकई दउची। ओके तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हमर लेफ्ट भाइगेट्सकी द्वारा दिया जायतिला डे पीडी तापरे कोन आसिला ना से जेडी कथा कहिसंती स्कैफोल्डिंग बा टेम्पोररी सपोर्ट कथा कहिसंती आउ कार्ल रोगर्स कोन कहिसंती ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कथा कहिसंती जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी B.F. Skinner operant conditioning theory
ओके ये सब जिनस सब लोक गोटे गोटे थ्योरी गोटे गोटे कॉन्सेप्ट विषय रे कहिसंदी नेक्स्ट आसिला कि हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एबे ही स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर रु तम माने ए आंसर ता देई सारिछो कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कथा किए कहिसंदी स्पियरमैन गिलफोर्ड थॉर्स्टन ना वाटसन एथरे हमर तिले मात्र मध्ये डाउट नाही कि किए कहिसंदी तुम मान ठारो मध्ये आंसर पाई सारिछि स्पियरमैन कहिथिले टू फैक्टर थ्योरी जनरल एंड स्पेसिफिक वेरी गुड रजत रजत पूरा अने की बसचंदी पानी करे कि एग्जाम केबे बाहरबो आ मो एग्जाम रे खाली टंग 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 करके लिखिबी तो सी आसिला द सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स एबे तमे कहउथलो सेल्फ कॉन्सेप्ट कथा किए कहिसंदी कार्ल रोगर्स तले एडी सेल्फ कॉन्सेप्ट माने कोन व्हाट वन जज ऑफ हिज अचीवमेंट व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ व्हाट वन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग व्हाट वन लर्न्स ड्यूरिंग टीचिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट आमे जेतेबेले कहउचे हम निजर सेल्फ कॉन्सेप्ट सेतेबेले सेम कॉन्सेप्ट माने कोन सेल्फ कॉन्सेप्ट कहले आमे कोन बुझू तार मानेटा कोन रहउची वेरी गुड बहुत बढ़िया व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ मु मो विषय कौन भाबुची तुमे तुम विषय कौन भाबुछो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कांसेप्ट ओके नेक्स्ट बा which of the following cannot be considered as a characteristics of learning it take place only in formal institution it is goal directed it is a comprehensive process it is the result of practice and experience कोउटा गोटे लर्निंग रा कैरेक्टरिस्टिक्स रे जीवन नाही बा हमें जा को कहउचे शिक्षण एथि मध्य कोउटा शिक्षण रा गोटिए वैशिष्ट्य नुहे only not तो राइट आंसर होची इट टेक प्लेस इन ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एहा केवल जे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में हुए ताहा नुह वेरी गुड इतिश्री एंड एवरीवन तो एटा फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल आम घरे आमर पेरेंट्स मान द्वारा कहा पाखे भी मध्य आमर एजुकेशन टा डेवलप हेई थाए देन आसिला कोन Now, a candidate is working hard to qualify the OSTET exam. The candidate is said to have been motivated. को motivation आमर दुई प्रकार motivation अच्छी intrinsic और extrinsic motivation. तो ए भितरु a candidate is working hard to qualify the OSSTET exam. ताहले एटा कोउथिरे जिबो निजे पढ़ुची ए कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड टू क्वालिफाई द OSTET एग्जाम एक्सट्रिंसिक ना इंट्रिंसिक कोउटा अब मु जदी कहबी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हेलो मधुस्मिता ए कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड टू क्वालिफाई द OSTET एग्जाम ताकू तो कहीं कही नाहांती फॉर सपोज मु तुमको एबे कहली कि मु गोटे जेनेरिक बनेली कि मु गोटे वीडियो बनाउची OSTET एग्जाम क्लियर कले तमे एटा पाइबो ओके किंतु सी निजे 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 पढुची हार्ड वर्क करूची काहे कि ना ताकू OSSTET एग्जाम क्लियर करिवार अछि कोटा हबो तो राइट आंसर इंट्रिंसिकली हबो से निजे अंतःकरण हार्ड वर्क करछि एठी ताकू के कहि नाहंती तू के पास करि गले तू एसएसबी टीजीटी एग्जाम क्लियर करिवो भले से देखिबो इंट्रिंसिक आ एक्सट्रिंसिक आ आंसर के सहित निजे को मैच करेबो तापरे आसिला कोन व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू परफॉर्मेंस एठी ताकू कोन से रिवार्ड दबा कथा कुआ जाय नाही ओके तापरे आसिला व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर इट इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एब्सोल्यूट पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफर
ସେଇଥିରେ ସେ ସେल्फ मोटिवेट ही होउछि जोठी मु कहिली कि तो ओएसटीटी एग्जाम क्लियर कले मु तते एटा करई देबी तू ओएसटीटी एग्जाम क्लियर कले ही एसएसबीटी देई परिबु तते जेमिति हेले टीचर हबार अछि ताहाले सेठी जदी सेमिति किछि सेंटेंस थांता से जिनसडा एक्सटेंसिक संग संग हेई थांदा किंतु इंस्ट्रिक्सिक कांग नाइटी केवल स्टूडेंट रो हार्ड वर्क कथा कुआई छि ताको फोर्सफुली केही पढिया कथा कुआ जायनी जीरो ट्रांसफर जदी कोनोसी इफेक्ट पडुनी जदी पॉजिटिवली इफेक्ट पडुछि पॉजिटिव ट्रांसफर जदी किछि डिस्टर्ब करूछि ताले सेटा कोन ना नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोली आमे कंसीडर करूचे वेरी गुड समस्त करेक्ट अछि नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट वाटसन ऑपरेंट कंडीशनिंग कोहलर ट्रायल एंड एरर तापरे थॉर्नडाइक इनसाइटफुल लर्निंग ना पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एटी व्हिच वन इज नॉट करेक्ट नो व्हिच वन इज करेक्ट हबा कथा not correct तो अच्छा A which of the following pair is not correct थॉर्नडाइक ना इनसाइटफुल लर्निंग देइथिले कोहलर ना ट्रायल एंड एरर देइथिले वाटसन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग देइथिले पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग ही देइथिले नेक्स्ट गला कोन ना तो क्रिटिकल पेडागोजी एमसेट तमरो कांसेप्ट बा गोटे यूनिट अछि क्रिटिकल करेक्ट कथा ओके तपस्विनी सेटा मु चेक करी कि कहिबी काहे ना मु तो जानी नाही फुल नोटिफिकेशन भी आसी नाही तेनु मैं एबे किछि स्टेटमेंट दबा को चाहू नाही मु जानिले निहाती भाबरे इन्फॉर्म करेबी क्लास रे ही इन्फॉर्म करे देबी क्रिटिकल पेडागोजी कोन एम्स करी छि टू रैशनलाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन ना टू डू अवे with the banking system of education to strengthen the banking system of education to monitor the banking system of education वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन बी 15 नंबर टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड यस आज समस्त को नुआ नुआ लागुथबो कि आज हम खाली ऑप्शन ए बी सी कहूचे जदी तुम मानकर आग्रह आसे तुम माने पढिबा को चाह आमे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आनिबा जेमते कि चैप्टर रो थ्योरी पढिबा ताबरे तार क्वेश्चंस करबा जहा जहा तम सिलेबस रे अछि डिटेल्स करबा आज जस्ट गोटे बेसिक कि केते जण इंटरेस्टेड अछंदी केते जण नाहंदी नहले मुझे कांथ बाड़ पवन पानी गछ लता वृक्ष को पढ़े पढ़े जीवी ओके क्रिटिकल पेडागोजी पौल फ्रेरे कथा तुमर कहाई इरासोर मध्य हेबे किंतु जदि प्रोपाउंडर प्रीवियस थर को जोटा 2025 रे हमर हेइथिला से जिनसटारे मते 2026 स्टार्टिंग रे हेइथिला से जिनसर तुमर पढिथिला जोथि कि पौल फ्रेरे फाउंडेशन फाउंडर बोली ओके नेक्स्ट आसिला कोन ना रिपीटेशन स्ट्रेंथन द कनेक्शन बिटवीन एस एंड आर What law of learning is based upon readiness, practice, effect ना कौन हबो Repetition strengthens the connection between S and R. What law of learning is the based upon readiness, practice ना effect ना use तमे जेते प्रैक्टिस करी करी जीवो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन रिपीटेशन स्ट्रेंथन तो रिपीटेशन रे तम बिहेवियर स्ट्रेंथन करबा माने कोन मु जेते प्रैक्टिस करबी मु ताकू सेते मो बिहेवियर को मो एक्टिंग को सेते के स्ट्रेंथन करबी तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर नेक्स्ट बा 17 नंबर हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी रे की एक्टिव बेसी टीचर लर्नर एजुकेशनल प्लानर ना पेरेंट्स Who is more active in critical pedagogy? कहा पाई कहा जाय छी वेरी गुड ऑप्शन बी लर्नर नेक्स्ट आछि 18 नंबर हु इज क्रिटिकल पेडागोजिक एजुकेटर आसी गला मार्टिन लूथर किंग थॉमस जेफरसन डाल्टन इरासोर एबे जणे ही कहउथिले इरासोर गुड आफ्टरनून तो एबे ही जणे कहउथिले इरासोर तमरा इरासोर ही आसी गले तुम पाहाकू कि
ना तुम्हें एबे टिके आगु कहूलो जिते मु तुमको कहली पौलो फ्रेरे होउछंती फाउंडर तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी इरासर ही हबो हु इज ए क्रिटिकल पेडागोजिक एजुकेटर तुमको एमती मध्ये देई पारे तेणु तमे जो जिनसटा बुझुचो जो कॉन्सेप्ट बुझुच कोटा कोठु आसीथिला आ गोटे जिनस मन रखिथिबो जतबेला एग्जाम पई प्रिपेयर होचो एटा कोठु ये को साइकोलॉजिस्ट अतंती ये कहा विषय कही छंदी तुमको पड़ी जिवो कि को माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पेडागोजी रो अथर नुहंती चारटा ना दे देबो हे भितर जणे हे नथिबे जणे बिहेवियरिज्म रो हेथिबे कंस्ट्रक्टिविज्म रो किए नुहंती सी आउ कहार हेथिबे तो एई भली भाबरे तुमको मन रखियार अछि कि बिहेवियरिज्म थ्योरी रे कोन कोन आसुछि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी रे कोन कोन आसुछि से जिंस गुडा को हमको कवर अप करिवार अछि नेक्स्ट हैला द यूज ऑफ टीएलएम इज नॉट एसोसिएट विथ तो to make teaching learning pleasurable, to cover the course content in time, to create motivation for learning, na to teach concrete concept. तो TLM हमें जो teaching learning material use करू छे ओके ठीक अछि संडे रो पीडीएफ सेंड करी देबी करिनी यस करिनी आजि करि दउछि to make teaching learning pleasurable teaching learning टा को pleasurable बनेवा to cover the course content in time course content को in time हमें cover करवा to create motivation for learning learning by हमें motivation create करवा ना to teach the concept तो राइट आंसर होची टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम ऑप्शन बी केबे भी हमें टीएलएम यूज करि न थाउ केवल पाठटा को इन टाइम रे सारी दबा केवल पाठटा को जल्दी जल्दी कवर कर दबा बा सिलेबस कवर करबा चक्कर रे हमें करि न थाउ नेक्स्ट आसला कौन ए लर्नर विथ स्पेशल नीड्स इज डिफरेंटेड फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अफेक्टिव बिहेवियर डिफरेंटेड फ्रॉम अदर्स इन टीचिंग लर्निंग बिहेवियर ना ऑल ऑफ दिस कोटा हबो तुमे माने भाबुछ ए लर्नर विथ स्पेशल नीड्स इज डिफरेंटेड फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर डिफरेंटेड फ्रॉम अदर्स इन अफेक्टिव बिहेवियर different from others in teaching learning behavior very good all of the above एठी करेक्ट आंसर हबो सी कोठी ना कोठी सब प्रक्रिया रे मे भी तम थारु कम मे थई पारे स्पेशल लर्नर्स बोली केवल हमें गोटे कैटेगरी को इंडिकेट करि परिबा नाही यस गवर्नमेंट ऑप्शन which of the following is not a component of educational management educational guidance educational planning educational administration educational supervision Which of the following is not a component of educational management? कोटा educational management रो component नुहे very good ना educational guidance टा educational management रो component नुहे next आसीबा the school administration should be democratic autocratic bureaucratic ना idealistic कौन हवा दरकार the school democracy आमे कहूचे वर्तमान रो जो चली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भली हवा दरकार ना डेमोक्रेटिक जो थे कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन समस्त को सेतिकी फ्रीडम दउथबे सेतिकी थिबो समस्त डिस्कशन माध्यम रे गोटे स्कूल रो डिसीजन मेकिंग पावर हेई पारिबो डेमोक्रेटिक नेक्स्ट आसेला व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन इंपोजिशन कोटा गोटे फैक्टर नुह डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो आराम से इथरो देखि देले ही हमको जाना पड़ुची कि कोटा गोटे फैक्टर नुह कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव देखो जदि तमे मैनेजमेंट विषय जानि नबे गोटे जस्ट एट जनरल जिंस सब पॉजिटिव अछि गोटे ही नेगेटिव अछि जोटा इंपोज करबा दाबी दबा इंपोजिशन सेटा हबो नाही हमर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रे हमें परस्पर को कोऑपरेट करबा कोऑर्डिनेशन समस्त भितर कोऑर्डिनेशन रहबा इंटीग्रेशन मिलित भाव रे हमें करबा किंतु इंपोज जण को जोर जबरदस्ती मारी दबा बा ता ऊपर सब किछि दबाई दबा से जिंस गुडा हमें करबा नाही नेक्स्ट आसला व्हिच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द रोल ऑफ ए टीचर फैसिलिटेटर फिलोसोफर फ्रेंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोटा गोटे टीचर सहित एसोसिएट नुह गोटे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रे ऑब्वियसली टीचर फैसिलिटेटर हेबे फिलोसोफर हेबे गाइड हेबे फ्रेंड हेबे किंतु एडमिनिस्ट्रेशन बोली तांको गोटे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसीडर करा जाय नाही से फ्रेंड फिलोसोफर गाइड नेक्स्ट आसले व्हिच वन इज कंसीडर एज द कोर ऑफ स्कूलिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट करिकुलम सिलाबी
कोर्स ऑफ स्टडीज टेक्स्ट बुक कोटा गोटे पिलांकर कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट रे मुख्य भूमिका प्ले करि थाए आमे जतोले स्कूल एजुकेशन बा पिला मानकर पाठ पढ़ा कहूचे सेथि पई हमर ऑल राउंड डेवलपमेंट छुआंकर कहा द्वारा हेइ थाए करिकुलम सिलाबी कोर्स ऑफ स्टडीज ना टेक्स्ट बुक वेरी गुड करिकुलम गोटे कम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट व्हिच इंक्लूड्स स्कॉलास्टिक and co-scholastic areas. Next है कि difficulty value and discriminating power of the test items are determined the stage of planning, preparation, tryout and administration. केबे करा जाय थे difficulty value और discriminating power टा को स्टेज रे एटा टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप आसला तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन चारिटा स्टेप आमे जानि छे प्लानिंग प्रिपरेशन ट्राई आउट एंड इवैल्यूएशन तो डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द टेस्ट आइटम्स इज डिटरमाइंड कोन हबो तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी ट्राई आउट ओके प्लानिंग स्टेज रे तुमे ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन करि थाओ सेटा अलगा कथा डिस्क्रिमिनेटिंग पावर मींस कोन ए ट्राई आउट टेस्ट रे हमें कोन करि थाओ गोटे पायलट टेस्टिंग क्रिएट करि थाओ ए पायलट टेस्टिंग रे हमें कोन करू ना गोटे सैंपल ऑफ पॉपुलेशन हमें जो पॉपुलेशन ऊपर काम करबा को जाउछे हमें कहूचे कि एनईपी 2020 फ्रूटफुल हबा हमें केमिति जानूछे ना एनईपी 2020 फ्रूटफुल हबा बोली हमें कोन करूछे ना किछि सैंपल ऑफ पीपल हमें ऑल ओवर इंडिया रे तो से जिनसटा अप्लाई करके देखि परिबानी तो किछि सैंपल ऑफ पीपल को द्वारा अप्लाई करके देखुछे तो केते कोन होउछि यार डिफिकल्टी वैल्यू कोन अछि तो हमें सही हिसाब रे दोउछे देखिथिबा गोटे गुड क्वेश्चन ना क्राइटेरिया हैला सेटारे हाई डिफिकल्टी लेवल नथिबा किंबा बहुत इजी नथिबा सब बेले मॉडरेट थिबा जहा कि जने हाईली इंटेलिजेंट पिला मध्य करि पारुथुवा जने नॉर्मल चाइल्ड जहा एते इंटेलिजेंस नथिबा सीए मध्य से अटेंड क्वेश्चन करबा को सक्षम हेथिबो नहले सब बेले तो जो माने इंटेलिजेंस चाइल्ड ही परीक्षा पास करंदे एंड लोअर लेवल पिला पास करि पारंते नाही तो सेटा हला डिफिकल्टी वैल्यू हमें सहितरे जाना पडु ट्राई आउट जेतले पायलट टेस्टिंग रे करूछे को पिला माने हमें इंटेलिजेंस पिला को गोटे ग्रुप आउ नॉर्मल पिला को गोटे ग्रुप लोअर स्टैंडर्ड पिला को गोटे ग्रुप नेले तो सेही थ्रू हमें जानी दउचे कि ए टेस्ट आइटम टा कहा पई हेल्पफुल और नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जदी किछि मिसकनसेप्शन अछि जदी किछि एम्बिग्युइटी अछि जदी किछि टेक्निकल एरर अछि ताहाले कोन हमें करि परबा से जिंस गुडा को हमें जानिले एवं डिस्क्रिमिनेट करूचे ट्राई आउट स्टेज रे ओके क्लियर नेक्स्ट जीवा ना 27 नंबर क्वेश्चन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एमसेट होलिस्टिक डेवलपमेंट स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट cognitive development na cognitive development तो राइट आंसर होची होलिस्टिक डेवलपमेंट बा ऑल राउंड डेवलपमेंट बा 360 डिग्री डेवलपमेंट ओके नेक्स्ट आसिला what type of grading system has been introduced by the BSc Odisha for high school examination higher secondary examination HSC examination absolute relative ना कौन very good रजत मिलनम अच्छा मु मिलन जेते तरह क्लास करछ तेया पढछि ना वेरी गुड राइट आंसर होछि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग नेक्स्ट जीवा हमें 29 नंबर क्वेश्चंस को व्हाट इज नॉट इन 3 in a blueprint relative weightage to the content relative weightage to the difficulty level relative weightage to the type of question relative to the weightage to the instructional objective एई भितर हमें जो कहूचे ब्लूप्रिंट बा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बा 3 डायमेंशनल चार्ट एई भितर को डायमेंशन ता हमें ब्लूप्रिंट रे देखि न थाउ वेरी गुड डिफिकल्टी लेवल न थाए इंस्ट्रक्शन थाए कंटेंट थाए टाइप ऑफ क्वेश्चन थाए
नेक्स्ट आसला व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज ओडब्ल्यूएसटी आमे जो ओडब्ल्यूएसटी एग्जाम दबा पई जाउछे तो सेटा को प्रकार इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव समेटिव प्लेसमेंट बा डायग्नोस्टिक वेरी गुड ऑप्शन सी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन सब बेले मन रखिथिबो ओएसटीटी ओटीटी सेटेट एगुडा को गोटे गोटे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन नेक्स्ट हैला at what stage of development is child usually appears at the HSC examination childhood late adulthood adolescence na adulthood yes placement assessment entry behavior तो basically हम हमारा high school exam adolescence period रे ही देई थाउ yes 4 distinct stages of child intellectual development are identified by Guilford, Piaget, Skinner ना कोहलबर कहा द्वारा हेथिला 4 distinct stages of child intellectual development साप देखिच बेंग खाईदेले जमती हल हल होता कुआड़े जापरेनि हेठी मारिदेले भी मारी पारिबो 50टा क्वेश्चन अच्छे किंतु आमे तो 50टा करि परिबा नाही किंतु 12टा बाजिया जाए आमे जति करि परिबा तो मोर कंडीशन एबे साप भलिया घर आसला बेले वर्षा पाग को गंडे पखाल बाड़े देकी आसीची जो पखाल दुर्विपाक हेतु पेटटा एमिति बढ़ी जाइछे नु ना चाली क्लास करि परछि ना मु ठियाई क्लास करि परछि ना मु कथा है कि क्लास करि परछि मु खाली बेंग भलिया एपटकू बेंग भलिया सेपटकू हेई चालीचे सेतेबेलु भाबुची मते कोन भारी भारी लागुची गिळिला भलिया सिना गिळिले हेथांदा तो राइट आंसर होची पियाजेट अति लोभरे भौणी खाइबा करके देइची आ मु कोन करछि पूरा तंटी जाए बाडे के गिळी की थाली थाली चाटी की आछी जार दुर्विपाक जो मो पेटटी आगु केते बढ़ी जाइछे मु तो एमित्रे गोटे छोटिया मनीष मा चाली पारोनी एपटकू बेंग भलिया चलुची पेट धरी धरी पुणी एपटकू बेंग भलिया चलुची कहीं मोर सबुदिन क्लास टू आज क्लास डिफरेंट थी तमें मैंने भी फिल कर पारुथबो जमती मु गोटे बाध्यकतार कहूची मु गप कहूची मते सेही भलिया भी फिल होची छाड़ा आउ को दिन बेंग भलिया खाई के आसीबिनी कम कहले इतिश्री आखिरे आखिए निद मैम आपणकर अरे वर्षा पाग को पुणी पखाल बाड़े देइची ता संग गरम गरम भजा आउ फेवरेट जिनस सब थुआ हेतिला आउ भल से मागणा मिलची बाड़े देके आछी आ सही भलिया जिनस किंतु भाबी नथिली कि मते ठिया हे ना क्लास करियार अछि पुणी वाइटी अछि इतिश्री आखिरे आखिए निद मोर सब दिन थाए आखिरे आखिए तो मोर सब बेले थाए तमें जिते बेले देख मत जब कौटी गोटे शांति प्लेस थोईदेव मुझे शोई पड़ी मते तकिया गंथा मते गदी किसी दरकार ना मत बस भितर कहले मुझे ठिया हे शोई पड़ी मत खाली चेयर बसिक शोया कहले मुझे शोई पड़ी ठीक अच्छे तो डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जोड़ा एसपीसीएफ किए देथिले ना जीन पियाजेट देथिले नेक्स्ट आसला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज इन वेट इंक्रीज इन साइज लिम्स इंक्रीज इन फंक्शंस ऑफ लिम्ब इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड लाइक कुंभकर्ण को भौणी फौणी थिली बधे इतिहास कहले आज टिके अधिका मते मो छुआ मानक अधिका आउ किए बुझी पारिबो ए मनर कथा तुमे माने ही बुझी पारिबो वेरी गुड ऑप्शन डी इंक्रीज इन फंक्शंस ऑफ लिम्स तो फंक्शंस जो बॉडी रो फंक्शन जेमती हाइट वेट बॉडी रो इंक्रीज सब कहा द्वारा हे पारिबो ना ग्रोथ द्वारा हेता है किंतु फंक्शनल मूवमेंट सब कहा को हम इंडिकेट करि थाउ ना डेवलपमेंट को ओके नेक्स्ट आसला कौन ना एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इगोसेंट्रिक सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल एबे आसीगला पुणी पियाजेंटर थ्योरी रो क्वेश्चन को स्टेज रे चाइल्ड रे इगोसेंट्रिक थाए सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वेरी गुड प्री ऑपरेशनल स्टेज केवल इगोसेंट्रिक नुआ आहुरी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स अछि जेमति कि एनिमिजिंग जेमति कि इरिवर्सिबिलिटी
देन आमे कौन कहि परिबा सेंट्रेशन लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग ए सब जिनस गुडा का हमको देखिबा को मिली थाए नेक्स्ट आसिला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इमोशन जेलसी क्यूरियोसिटी प्लेजर अफेक्शन बहुत बढ़िया क्वेश्चन वेरी गुड जेलसी एमितिका क्वेश्चन पढ़िले मु पूरा गुदुलु 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 हेई कि लिखि देबी नेक्स्ट आज लास्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट को स्टेटमेंट टा करेक्ट नुह डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट डेवलपमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कोटा बा पिले 136 बी यूनिफॉर्म रेट रे हेई न थाए तो 36 नंबर हैला हाँ एठी आसिला कौन पिला माने ना एटा होउची कौन ना मोर टेलीग्राम चैनल सीडीपी बाय सुनीता मैम तो एथिरे जॉइन हे जबो अपकमिंग क्लास रिलेटेड को दिन कोन क्लास होची काहे ना सब दिन ता ओडब्ल्यूएसटी पई क्लास होवनी किंतु को दिन क्लास होची कोन होची एसएसबी टीजीटी पई हमरो कोन क्लास होची हम एठी जानि परिबा ओके थैंक यू एवरीवन एंड ता सहित जो माने ओडब्ल्यूएसटी सहित प्रिपेयर होबा को चाहू छथि आडा 24/7 रे आपनकर बैच स्टार्ट हे सरचे नियाति बाबरे कांटेक्ट करि परिबे एंड इफ एनी क्वेरी ताले तुमे माने मो कांटेक्ट नंबर सहित मध्ये मते कांटेक्ट करि परिबा थैंक यू सो मच क्लास टी को एठी एंड ऑफ करबा देखाबा